Hello, hello, hello. Am I audible? Is everything fine? Okay. So very good evening, officers. Very good evening and a warm welcome to everyone. So today we are studying ratio and proportion, anupat or samanupat. So this is a very important topic. Unlike other topic like compound interest, profit and loss, CI, SI and all, ratio and proportion is a comparison or it's a method, right? So which we will be using in DI as well as caselets and arithmetic part. So this is very important topic. I hope I am audible. जय हिंद जय हिंद. अमन यादव, सिलेक्शंस के लिए बहुत स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और लगातार मेहनत करना पड़ता है. परसिवरेंस इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो चेक इट आउट वेयर इज द लूप होल. और बहुत बड़ा समय नहीं हो गया है. सिलेक्शन समटाइम्स क्या होता है कि किसी किसी का 1.5 साल 2 साल में हो जाता है. समटाइम्स सिलेक्शन टेक 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स एज वेल. फाइन. सो यू नीड टू ना, इट्स पॉसिबल कि क्या होता है कि कई सिलेक्शन के टाइम पर ना कई लोग क्या होते हैं स्टार्टिंग के 1 ईयर या स्टार्टिंग के 1.5 ईयर्स बहुत सीरियस नहीं होते. उनको लगता है कि लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी. ठीक है. बट जब उनका 2 साल 3 साल हो जाता है तब तब उनको पता चलता है कि व्हाट स्टडीज मीन, कहाँ हम लैगिंग कर रहे हैं. ठीक है. तो इट नॉट अबाउट कि मैंने 5 साल तैयारी की या मैंने 6 साल तैयारी की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. इट्स ऑल अबाउट कि आपने 1 साल की हो या 6 महीना हो, किस डेडिकेशन से की. ठीक है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि वेदर यू आर डेडिकेटेड इनफ और नॉट. सो फॉर अ सिंपल सिलेक्शन एटलीस्ट एन एवरेज ऑफ 2 इयर्स इज नीडेड, राइट? So 2 years. Why I'm saying average? Because some are people used to take average selections in one year or 1.5 years. Some takes 3 years or 4 years. Fine. So at least 2 years is needed. 60 डेज में मैथ्स का पेपर निकल सकता है क्या सर? इन 60 डेज, ये 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम थोड़ा है कि 60 डेज में पैसा एग्जाम निकल सकता है क्या? ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्त. 60 डेज में कोई जादू नहीं होगा, कभी नहीं निकलेगा. ठीक है. Start. Let's start. So the first question is this. Question क्या कह रहा है? What the question is saying? Question says rupees 4600 is distributed among A, B, C, D such that B gets 20% less than A. Okay. So B as compared to A, B को 20% कम मिल रहा है. B is getting 20%. 20% is 1/5. 1/5 कम मिल रहा है. That means the comparative ratio is 5 and 4. So B is getting 20% less than A. B को 20% कम मिल रहा है. And B gets 1/3 less than C. So B is getting 1/3 less than C. So as compared to C, he is getting 1/3 less. 1/3 means 33.33%. That means 3 and 2.
but D gets 33.33% more than C. D is getting 33.33% more than C. So as compared to C, D is getting 33.33% more. So at compared to this person, he is getting 1/3 more. So if this is 3, this will be 4. Clear? We can directly write the ratios. So what is the ratio between A and B? That is 5 and 4. Between B and C, it's 2 and 3. Between C and D is 3 and 4. D is getting 33 1/3% more. Now you can just look over here. The value of B has to be same. B over here is 4. B over here is 2. So I'm multiplying this entire expression by 2. So what we are getting? So we are getting the ratio of A, B, C and D. Now the ratio of A, B, C, D is what? 5 और 4. 5 and 4 is A and B. B becomes 4 over here. C is 6 and D is what? 8. So this is their individual ratios. So you need to divide this entire sum in this ratio. Voice is too low. My voice is too low. Okay, now it's fine, I guess. So this is the ratio. Now what? Find the sum of B and C. Sum of B and C should be multiple of 10. Sum of B and C is 10 unit. You need to calculate the value of 10 unit. Sum of B and C. B और C का total पैसा निकालना है आपको. ठीक है? 4600 is the entire sum. So distribute this entire sum in this particular ratio. What is the ratio? This is 5 plus 4 is 9. 9 plus 6 is 15. 15 plus 8 is 23. That means the total unit is 23. 23 is representing 4600. 23 को हम 4600 बोलेंगे तो 1 unit is equivalent to what? 2000. If 1 unit is equivalent to 200, sorry, 1 unit is equivalent to 200. If 1 unit is 200, 1 unit अगर 200 के बराबर है, then the sum of B and C will be 10 times of 200. तो B plus C की जो total value होगी वो 2000 हो जाएगी. ठीक है? This is the entire sum of B and C. Is it clear everyone? B और C की जो total value होगी वो कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी. तो ये एकदम एक basic method था. basic हम इसमें ना जब हम इस channel पर देखो Oliveboard के there are 2 channels, right? This is regulatory body channel and when we have early morning 6 am है ना banking channel. So early morning 6 am में ना early morning 6 am we are doing calculation oriented questions है ना. Daily at early morning 6 am we are doing calculation oriented question है ना. That is banking channel and this is regulatory body channel है ना. तो 2000. Very good. Now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए. जय हिंद एवरीवन, जय हिंद. ये अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो जिनके मैथ्स अगर वीक भी है और उनको अच्छा सीखना है. जैसे आरबीआई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखने आते हैं तो दे कैन टेक द नॉलेज फ्रॉम हियर. आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं. अगर कोई किसी छोटे एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा है तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकता है. ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ा रहे होंगे ना. धीरे धीरे हम लेवल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे. वी विल इंक्रीज द लेवल. ABCD together invest rupees 60,000. The investment of A is 2/3 of the remaining person. This is important. ठीक है, so the investment of A is 2/3 of the remaining person. Remaining person is BCD. Okay, 2/3 of remaining person. The investment A की जो investment है बाकियों का 2/3 है. 2/3. ठीक है. The investment of B is what? 1/4 of remaining person. Remaining is ACD. तो बाकियों का 1/4 है. ठीक है, 1/4 है. ठीक है, बट द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज 1/5 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन. इन्वेस्टमेंट ऑफ सी जो है वो बाकियों का ABD का 1/5 है. क्लियर? अब यहां मुझे देखना है. देखो हियर वी हैव ABCD फाइन. ABCD की एंटायर इनकम यहां कितनी रिप्रेजेंट कर रही है? 5 रिप्रेजेंट कर रही है ना. यहां कितनी रिप्रेजेंट कर रही है? 5 रिप्रेजेंट कर रही है. ABCD की एंटायर इनकम यहां कितनी रिप्रेजेंट कर रही है? 5. कूल, दैट्स कूल. लेकिन अगर मैं यहां ABCD की एंटायर इनकम देखूं ना तो ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज नॉट कूल, राइट? द एंटायर इनकम ऑफ ABCD हैज टू बी सेम. ABCD की एंटायर इनकम सेम होनी चाहिए. सो व्हाट वी नीड टू डू इज इन 5 और 6 को इक्वल कर दो. लेट्स मेक दिस 5 and 6 इक्वल. हाउ टू मेक दिस इक्वल? So you should multiply this by 6. The moment you are multiplying this by 6, you are making it 30, right? आप इसे 30 बना दे रहे हो. ठीक है, make it equal, that is 30. So from here we will be getting the ratios of A, B, C, D. Clear? 6 times of 2 is what? 12. 6 times of 1 is what? 6.
5 times of 1 is 5. Entire income was 30. So 12 plus 6 is 18. 18 plus 5 is 23. That means D will be 7. Clear? So we got the income. This is we got from here, that is 12, 6, 5. So 12, 6, 5. 12 plus 6 is 18 plus 5 is 23. 23 plus 7 will be 30. So the entire income is 30. So divide this entire sum. So this is 30. Find the investment of D. So investment of D will be multiple of 7. So what is the investment of D? So D is getting 7 unit out of 30. Clear है सबको? Devki Nandan, yeah, 7. So D is getting 7 out of 30. And the total income, what is the total income? The total income was 60,000. 60,000. So the moment you divide this, ये कितनी बार में चला जाएगा? 2000 बार में. So 14,000. So we can just say 14,000 is what the income of D. So income of D कितना हो गया? 14,000. बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो का फॉर्म था, इसे हमने बहुत अच्छे से देख लिया. So this is the easiest way of solving this question, है ना? Easiest way of solving this question. 14,000 is the answer, है ना? हमने क्या किया? What we have done is, here the income of ABC was 5, here 5, here 6. So I made it 30, right? मैंने सबको 30 बना लिया. We made it 30. 30 बनाकर हम अप्रोच कर गए. बहुत सुंदर. श्रावणी, वेरी गुड. वेरी गुड श्रावणी, बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन से, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ठीक है, स्टार क्वेश्चन. आप इससे ना अलग से कॉपी बना सकते हो. देयर आर सर्टेन मेथड्स एंड सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. Fine, certain methods are very important. Fine, so we will be using such a method in this question that you will be highly involved in that, and that particular method you should write in a particular copy. There has to be two different copies, in which one of the copy you are writing all the shortcuts and all, shortcuts, trick and all, and one of the copies you are writing all the important concepts. Fine, concept. Suppose you find a question very interesting question is there, right? So you write it down, because suppose let's say suppose for a moment, if you are taking this kind of copy, right? So this copy, this particular notebook, I just don't know whether I will be having this or not after 2 years, right? But what if I'm having a particular notebook in which important all the important tricks are there, or all the important questions of respective topics are there. अगर वैसा कोई कॉपी मेरे पास है तो वो उसे मैं बचा कर रखूंगा. I will be saving it for the later half, right? तो इसे ध्यान रखिएगा. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द इनकम रेशियो ऑफ ABC इज 374. फाइन. तो हमारे पास ना 3 लोग हैं, A, B एंड C. तो ये जो इनकम का रेशियो है ना, ये कितना है? 3, 7 और 4 है. ठीक है, दैट मींस ये 3x, 7x एंड 4x. ठीक है, जो x होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फाइन. एंड द एक्सपेंडिचर रेशियो इज, and the expenditure ratio is what? 435. You will find a very beautiful approach of solving this question. See, in arithmetic na, that is approach is important. If you are not having a beautiful approach, you won't be able to think out of the box. If you are not able to think out of the box, then how come you'll be eliminating all the 10 questions of arithmetic asked in banking sector? Fine. तो देखते हैं इसमें अप्रोच क्या होगा. A saves rupees 300. It looks like A is having less income as compared to his expenditure. कैसा लग रहा है कि A की इनकम जो है ना, उसके एक्सपेंडिचर से भी कम है. लेकिन ये रेशियो है, इसके साथ ना पॉलिनोमियल x आया होगा, इसके साथ पॉलिनोमियल y आया होगा, राइट? तो ये अलग अलग रेशियो कंपैरेटिव डिग्री है. ठीक है, अब A के बारे में उसने क्या बोला? हाँ जी, कोई डाउट? हाय 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 शोहन. So I'm having a comment, I'm seeing your watching a comment also. You can just put any doubt anywhere. Fine. What about A? A says, dude, I am saving 300 rupees out of the total income of 2400. That means he is saving, A is saving 200 rupees, 300 rupees, sorry. He is saving 300 rupees out of his total entire income of 2400. So 300 by 24 is nothing but 1 by 8. That means 12.5%. तो इसका ये मतलब है कि A अपनी 8 रुपए की इनकम में से 1 रुपए की इनकम बचाता है. A is saving 1 out of income of A. So this is representing his income and this is representing his savings. But over here, this particular ratios are the ratios of income and expenditure. So can't we get the ratio of income and expenditure? Yes, we can get it.
Get that? So the ratio of income to that of expenditure will be 8 and 7. Okay, beautiful. So if somebody is saving 12.5%, that means he is spending 87.5%, 87.5%, 7 by 8. अब देखने वाली बात क्या है दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, द मेन कंसेप्ट, द मेन थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस शुड बी इन द रेशियो ऑफ 8 and 7, विच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रो वो ना 2400 में से 300 बचा रहा है। 2400 में से 300 रुपए बचाना मतलब 8 रुपए में से 1 रुपए बचाना, दैट मींस 8 रुपए में से आपने 7 रुपए खर्च कर दिया। टू हैव वी हैव स्पेंडेड 7 out of 8. That means this should be in the ratio of 8 and 7. This is like income and expenditure. It should be in the ratio of 8 and 7. This is not in the ratio of 8 and 7. How to make it 8 and 7? देखो, अगर मुझे 3 और 4 को 8 और 7 बनाना है, if I need to make this 8 and 7, so how to make it 8 and 7? First make it equal. Fine. First make it equal. This is 12 and 12. Now multiply with the desired ratio you want. 8 and 7. See what will happen? This 4 and this 3 will get eliminated, and this 8 and 7 will be left behind. So that what I am doing is I am multiplying this expression by 3 and I am multiplying this expression by 4. By doing so, this I am making it, sorry, I am multiplying it by 4 and I am multiplying it by 3. So by doing so, what I am doing it, मैं इसे 12 बना चुका हूँ. 4 into 3 is 12, 3 into 4 is 12. बट मुझे इक्वल नहीं बनाना इन दोनों को, मुझे तो इनको 8 और 7 के रेशियो में बनाना है. तो मैंने क्या किया, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना. जो काम मैंने यहाँ किया था वही काम वहां कर दिया मैंने. अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये पूरा एंटायर रेशियो मेरा कैंसल आउट हो जाएगा. मेरे पास एक न्यू रेशियो आया, द रेशियो ऑफ इनकम टू दैट ऑफ एक्सपेंडिचर. आप लोग के कमेंट्स देख लो मैं जरा. ओके, सोन शंभू इज गेटिंग 3450. देखो, अगर मैं 32 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 32 टाइम्स ऑफ 3 कितना होता है? 32 टाइम्स ऑफ 3 इज 6, 96. दिस इज 32 टाइम्स ऑफ 7. 32 देखो, 32 टाइम्स ऑफ 7 इज व्हाट? 32 रिटर्न 7 टाइम्स और 7 रिटर्न 32 टाइम्स. 7 रिटर्न 30 times will be 210 plus 14, that is 224, 224, है ना. 32 times of 4 and 32 times of 4 is what? 128, है ना. ये आपको हो गया. And what about the expenditure बच्चा? This is 21. 21 times of 4 is what? 84. 21 times of 3 is what? 63. And 21 times of 5 is 105. This is A, this is B, and this is B, C. See? So these are the respective ratios. So this is what? 12. Saving. Here this is what? 16, 161. And what about here? This is 23. So 12, 161, 12, 161 and 23 are the respective saving ratio. Now ये इनके आ चुके हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट. नाउ दिस 12 is the saving of A and this 12 is represented as, this 12 unit is represented as 300. The savings of A was 300 which is 12 units, so 12 in unit is representing 300. 12 की value 300. What we need is, we need the difference of the savings of B and C. Difference of the savings of B and C is needed. So difference of savings of B and C is what? 161 minus of 23. 161 minus of 23. How to make it? So 160 minus, take it 160. 160 minus 23 is easy. That is 137. Plus 1, that is 138. So this is 138 value you need to calculate. So that is 300 upon 12 times of 138, which is basically 6 times of 2, and this is 6 times of 50. This is 2 times of 6 is 12, 69 into 5. So 69 multiplied by 5. Any number when multiplied by 5 should be, make it half first. So this is 3, make it half, 3450. So 3450 is what the difference of their savings. Is it clear? B equals 161. Yeah, B equals 161. Devkinandan, you are right. So B equals 161. This is 23.
Difference of their savings is 138. Difference is 138. You need to calculate 138. So 138 is what 2. तो ये आया, ठीक है. अब इस पे आगे बढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चंस इस पे हैं. एग्जैक्टली सेम. अच्छा, इसमें पहले आपको ना एक कॉइन्स वाला क्वेश्चन करवा दो. पहले आपको एक कॉइन्स वाला क्वेश्चन, पहले ये कर लो, ठीक है. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हम ये कर लेंगे, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा डीप में जाएंगे, ठीक. ये तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेदर यू ऑप्टिंग फॉर banking exam or insurance exam or RBI exam, any form of examination. Okay, 3 bottles of equal capacity containing mixture of milk and water. Okay, so there are 3 bottles, their capacities are being equal, so this is the ratio of milk. They are containing ratios of milk and water. In the first container it is 2:5. The ratio of milk and container in second is 3 and 4. In the third we have 4 and 5. What about the volumes? Check out the volume. The volume is 9. The volume is 7. Sorry, the volume is 7. The volume is 7 and the volume is 9. Question says all the 3 containers should be mixed in the 4th container with equal volume. It is being mentioned clearly. 3 bottles of equal capacity, that means the volume has to be same. Volume को समान बना दो भाई. कैसे? To make it 63, I need to multiply this particular expression by 9, this by 9 and this by 7. By doing so I am making the volume equal, so that this is the ratio of milk to that of water. 9 times of 2 is what? 18, and 9 times of 5 is 45, so I have made it 63. 9 times of 3 is 27 and 36, and 7 times of 4 is 28 and 35. Now all the volumes are 63 now, so add the milk wala part and the water wala part, we will be getting the answer now. 16 plus 7, 16, see, check out this, 73, 73, 73, 73. So you do one thing, check out this number. This is 10 plus 6 is 16, carry 1, 9, 10, 3 plus 3 is 6, 10, 10 plus 1 is 11. So 116, that means this should be 73 ratio 116, which is nothing but option number B, Temba Babuma. Option number B, Temba Babuma will be your answer. Clear? 73 and 116. Sohan Kumar, बहुत अच्छे. Shravani, very good. Very good, बच्चा. Very good, very good, very good. Next question. Sohan Sambhu, for which exam you are preparing? Sohan Sambhu, कौन से exam की preparation कर रहे हो आप? For which exam you are preparing for? Okay, 3 vessel ABC having the mixture of milk and water in the ratio this. So there are 3 vessels which contains the ratios of milk and water in the ratio of 3:2, 2:1 and 3:1. These are the ratio. The mixture are taken out in the ratio of this. Okay, so there are 3 containers. So now I am taking the milk and water in the ratio of 10, 9 and 8. In the previous question the volume was equal, that means I have taken it in 1 and 1 and 1 ratio. If the container are of equal capacity, that means the ratios are equal. Now I am taking this in 10, 9 and 8. This is 5, this is 3 and this is 4. So what we need to do is we need to make it 10, 9 and 8. How to make this as 10, 9 and 8? First make it equal first. पहले equal बना लेते. So to make it equal, their multiple is 60. So this is 5 times of what? 5 times of 12 is 60. 3 times of 20 is 60. 4 times of 15 is 60. So I made it equal. This is 60, 60 and 60. Now if all of them are 60, 60 and 60, so now if you are multiplying by 10, 9 and 8, what will happen? This 60 will get eliminated and 10, 9, 8 will be reflected. So now make it, multiply this by 10, this by 9 and this by 8.
So before multiplying, just like look at any common number is there or not. Okay, this is 0 eliminated, this 0 eliminated. We need to eliminate 5 and 2. 5 times of 3 and 2 times of 4 eliminated. See, this 3 is eliminated. This 3 times of 3 is 9 and this is 3 times of 4 is 12. So I am eliminating the common factors. So it's better to multiply by 4 rather than 120. So 4 times of 3 is what? 12 and 8. 3 times of 2 is what? 6 and 3. I guess 3 into 2, 2 was 6 was remaining. So 3 into 2 is 6. 6 into 2 is what? 12 and 6. And now this is 4 into 3 is 12 and 4. This is in the ratio of 10, 9, 8. You can just add and check it out. This is 20, this is 18 and this is 16. When you are multiplying by dividing it by 2, what will happen? This is 10, this become 9 and this become 8. Okay. So this is 12, 9 and 8. So this is milk and this is water. Add the milk wala part and the water wala part. The milk wala part is 36 and what about the water wala part? That is 18. So the ratio will be what? 2 and 1. So anybody getting the answer? So after mixing this, after mixing the entire 3 container into the 4th one, you will be getting this ratio. So one symbiosis. सर वन रिक्वेस्ट है, बताइए आप रिक्वेस्ट बताइए, आपकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी अगर मानने लायक हुआ तो, लेकिन अगर तुम बोलोगे मुझे कि कच्चा बादाम डांस करके दिखाओ, सो आई वोंट बी डूइंग कच्चा बादाम. 2 and 1 वेरी गुड. वन रिक्वेस्ट है प्लीज, इतने प्यार से तुम रिक्वेस्ट पूछ रहे हो, बताओ. जान दे देंगे, जान दे देंगे तुम्हारे लिए, अमित शाह की तरह जान दे देंगे तुम्हारे लिए. बताओ वन रिक्वेस्ट क्या है तुम्हारी, बताओ. यार तुम वहां की बात यहाँ कहाँ कर रहे हो, तुम भी है. दैट इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये अभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है. ठीक है, जब मैं उस पर क्लास लूंगा तो उस पर बताना है ना, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा आपकी बात, टेंशन मत लो. मेरी वॉइस सबके लिए बहुत स्लो है कि सिर्फ श्रवणी को कम सुनाई दे रहा है, कि सबके लिए स्लो है, बताओ. Fresh fruit contains 80% water and dry fruit contains only 20% water. How much quantity of dry fruit can be obtained from 60 kg of fresh fruit? Even this is a part of ratio form question, ratio and percentage based question. जैसे हम रेशियो से भी कर सकते हैं और परसेंटेज से भी कर सकते हैं. क्या कह रहा है भाई? फ्रेश फ्रूट, सी फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर. इन अ फ्रूट, सपोज इट्स अ फ्रूट, इन अ फ्रूट वी हैव टू थिंग्स, है ना. वी हैव वाटर एंड वी हैव पल्प. फाइन. Whenever we are eating fruit na, we are just chewing it, so we are chewing the pulp wala part, and what we are the mouth becomes watery because of the water content inside it, right? So whenever this fruit is kept in a day's sunlight, what will happen? If this particular fruit is being kept in the sunlight, some water part will be evaporated from this pores, पानी उसमें से उड़ जाएगा and its weight will reduce. And what if, have you seen this, अगर आपने किशमिश को पानी के अंदर डाला ना, तो किशमिश ना फूल जाता है. दैट रेजिन्स बिकम वाइटर, राइट, बिकॉज वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड उसका वेट भी बढ़ जाता है. दैट मीन्स वाटर इज नॉट अ कांस्टेंट पार्ट, राइट, बट पल्प रिमेन्स कांस्टेंट. सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली वी विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर सम. यार कभी भी किसी भी फ्रूट को अगर आप रखोगे ना धूप में, तो उसमें से पानी निकल जाता है, लेकिन जो पल्प वाला पार्ट है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है. Whenever you are keeping a particular fruit in a day's sunlight, the water part will get evaporated, but the part of pulp, the quantity of pulp, I'm not talking about the concentration or the percentage, I'm talking about the physical identity. The quantity of pulp will remain same. In the fresh fruit, 80% was water, and in dry fruit the water is only 20%. How much quantity of dry fruit can be obtained from 60 kg fresh? So I have taken 60 kg of fresh fruit. And in this 60 kg of fresh fruit, what was the amount of pulp? Sir, water part was 80%, that means pulp has to be 20%. Let's say we have x kg of dry fruit now, and over here also pulp part will be same. Now dry fruit contains 20% water
So that means pulp part has to be 80%. Clear? Both side pulp has to be constant, same. So quantity of pulp remains same. So I'm eliminated this. So 20% this is 4 and 4 times of this is 15. So we can just say from 60 kg of fresh fruit you will be getting 15 kg of dry fruit. 60 किलो ताजे फल से आपको 15 किलो सूखे फल मिलेंगे. क्लियर है भाई साहब? Is it clear? 2.4 kilo is wrong. Pulp is constant, that for sure. From 60 kg of fresh fruit you will be getting 15 kg. In 60 kg the pulp was 20%. And in dry part it's 80%. Water was 20, so pulp is 80. 20 times of 4, 4 times of 15 from x kg. What is the value of x? That is 15 kg. 15 kg will be the answer. How come you are getting 2.4 kg, both of you, Sohan and Shravani? How come you are getting 2.4? Even we can calculate this via ratio method also. See, if you want to have a ratio method, अगर आपको ratio method से करना है तो आप ऐसे करोगे. सर ये वाटर है और ये पल्प है. पहले अगर जब फल फ्रेश था ना, when the fruit was fresh, 80% was water, that means 20% was pulp, that is the ratio was 4 and 5. 80 and 20 is having a ratio to 4 and 5. और जब फल ड्राई हो गया ना तो रेशियो इज इंटरचेंज 1 and 4 है ना. इट बिकम्स 20% वाटर. क्लियर? 2.4 kg इज रॉन्ग. ठीक है. अब देखो द पल्प हैज टू बी कांस्टेंट. तो मेक दिस पल्प पार्ट कांस्टेंट. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1. So the moment I am multiplying this by 4 and 1, what will happen? This is water and this is pulp. The ratio becomes 16 and 4. और ये क्या हो गया? तो 1 and 4. So pulp becomes constant. The main theme of this question is to make the pulp part constant. So we can just see the fresh food, the amount of volume was 20, which now becomes 5. This 20 is represented as 60 kg, which is 3 times. So 5 times of 3 is what? 15 kg. So 15 kg. With any method you are doing, you will be getting 15 kg only. Clear है भाई? Is it clear everyone? जल्दी से बता दो, clear है? Okay, आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्वेश्चंस पर. This is coins oriented question. सिक्कों पर आधारित प्रश्न. क्या कह रहा है देखो. चंदन, मुझे भी पिला दे भाई चाय. मैंने कौन सा धोखा कर दिया तेरे साथ? मुझे लगा धोखा कर दिया मैंने तेरे साथ. Cheers. Actually in Dehradun it's too much of cold, damn cold, and my house is just nearby a kind of forest area. So it's damn necessary to have warm water or tea once or twice in a day. Though I don't have a habit of drinking tea, but sometimes when the weather is too much of cold, it's necessary for the body. Okay. A bag contains rupees 55. Fine. In the form of 1 rupee 50 paise. See, 1 rupee 50 paise and 25 paise. Only 3 varieties of coins are put in the bag. Now, the ratio of the coins are, their number are given. Their number are in the ratio 1:2:3. These are their number. And the total amount of rupees was 55. Total amount of rupees is 50. Clear? So convert this into values. If I am converting this into values, what will happen? Sir, you do one thing. You convert this into paise. That is 5500. 5500 paise. Why I am doing so? Because 25 paise of 3 paise is 75 paise. Or else you can just put this also. Not to worry. 1 rupee of 1 coin is 1 rupee. 50 paise of 2 coins is having a value of 1 rupee. 25 paise of 3 coins is having a value of 0.75 paise. That is 0.75 rupees. Fine.
If you want to convert into paise, convert everything into paise. And if you don't want to have this calculation, multiply this by 4, you won't be having any calculation. If I am multiplying this by 4, what will happen? Let's say if I am multiplying this by 4, why I am multiplying this by 4? Because this is not a multiple of 4, but for every 25 paise, 425 paise, I need 1 rupee. So the moment I get multiplied by 4, what will happen? The ratio will become 4, 8 and 12. So now this is eliminated. This is the ratio of number. Now this is the ratio of value. 1 rupee of 4 coins is 4 rupee. 50 paise of 8 coin is 4 rupee. And 25 paise of 12 coin is divided by 3, that is 3 rupees. So the entire money in the bag is 11, which according to the question is 55. So that means 1 unit is equal to 5. And if 1 unit is 5, 4 into 5, 8 into 5 and 12 into 5 are the respective values, respective numbers. Find the number of 50 paise coins. So 50 paise coins is how much? So 50 paise coins will be 8 times of 5, because 1 unit is 5, so 8 times is what? 40 rupees. 40 coins. 40 coins will be the answer. 40 Sohan Sambhu, very good, very good, very good, very good. आगे बढ़ते हैं. Now this is a beautiful question, beautiful concept we will be using here. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे. आकाश, अपने ग्रुप में रहो आप, उसी ग्रुप में आपको मैसेजेस आएगा और आपको पता होना चाहिए, है ना? अगर आपको पता नहीं है तो इसका मतलब आप अवेयर नहीं हो चीजों से. रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 3:2. भाई मेरे पास एक लैंड है और वाटर का रेशियो दे रखा है. पूरे पृथ्वी की बात कर रहा है, पूरे पृथ्वी की, पूरे कंप्लीट पृथ्वी की बात कर रहा है कि पूरे पृथ्वी पर लैंड से वाटर का रेशियो, द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इज 3:2. फाइन. एंड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपको मजा आ जाएगा देखिए कंसेप्ट देखोगे तो आप. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो रेशियो होगा वो 2 और 1 है. देयर कैन बी डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. जो मैं आपको देने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. ठीक है, यू शुड बी हैविंग द बेस्ट अप्रोच ना. अगर आपके पास बेस्ट अप्रोच नहीं है तो आपको सर्च हंट करते रहना है. ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इफ यू आर टेकिंग टू मच ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू नीड टू बी हंटिंग टू गेट द बेस्ट अप्रोच, है ना. अगर वो कोई रेलेवेंट टाइप है तो एग्जाम से लेकर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 3 और 2 का रेशियो है, 2 और 1 हो गया. अगर मैं अपने पूरे पृथ्वी की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर अर्थ, दिस इक्वेटर पास फ्रॉम विद इन, दैट मींस दिस इज नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउथ हेमिस्फीयर. मेरे पास 2 हेमिस्फीयर आ गए और ये इक्वेटर ना, इसको ना, ये इक्वेटर जो है इसको बराबर रेशियो में बांट रहा होता है. दैट मींस द एंटायर वॉल्यूम, अगर मैं किसी चीज को बराबर हिस्सों में बांट दूंगा तो उसकी वॉल्यूम बराबर बराबर हो जाएगी और 2 बराबर चीजों का रेशियो 1 और 1 हो जाएगा. ठीक है, 1 और 1 हो जाएगा. तो मैं ये बात बहुत सहजता से कह सकता हूं कि द रेशियो ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ साउथ हेमिस्फीयर विल बी 1 and 1. वॉल्यूम की बात करूं तो इंटायर वॉल्यूम इनके बीच में 1 and 1, देयर वॉल्यूम विल बी 1 and 1. एंड एज कंपेयर टू द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, अर्थ का जो वॉल्यूम होगा वो डबल हो जाएगा, isn't it? तो यहां पर मेरे पास अर्थ का रेशियो और नॉर्थ हेमिस्फीयर का रेशियो है. नाउ द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर अर्थ इज 5 एंड दिस इज 3. दिस इज नॉट गुड. इफ दिस इज 5, दिस हैज टू बी 2.5, क्योंकि अर्थ से आधा होना चाहिए. एंड इफ दिस इज 3, दिस हैज टू बी 6. यार ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के कंपेयर में डबल होना चाहिए. दिस इज नॉट डबल, जबकि ऐसा तो होता नहीं है. तो हम क्या करेंगे, we need to make this as 2 and 1. How to make it 2 and 1? How to make this 5 and 3 as 2 and 1? So first make it equal, then multiply by 2 and 1. This 15 and 15 will get eliminated. Don't eliminate this 3 from 5, okay? This the number which is written in bracket should be multiplied inside. Now I am multiplying this inside. That is 6 times of 3 is 18 and 12. This is earth. So we can just see the complete volume on earth is 30.
and this 5 when multiplied over here, this is 10 and 5, this is north hemisphere, so this is 15. See, on earth the volume was 30, north hemisphere is half, so now this is eliminated. So what is the ratio in south hemisphere? Out of 18 किलोमीटर रोड, अगर पूरी पृथ्वी पर 18 किलोमीटर रोड है, north is having 10 kilometer, that means south will be having 8 kilometer. Out of 12 liter of water, if the entire earth is having 12 liter of water, अगर पूरी पृथ्वी पर 12 लीटर पानी है, तो नॉर्थ में 5 है, तो साउथ में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. तो दिस विल बी द डिजायर्ड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन southern hemisphere. So this is a very important method. आकाश, ये आपके लिए नहीं है बच्चा. Fine. So 8:7 is the answer. 8:7 is the answer. और मैं डुअल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अगर तुमको इतनी भी नहीं आ रही है समझ, तो तुम कौन सा पेपर निकालोगे? है, अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो गलत बात है, बहुत गलत बात है. What you didn't understand, बच्चा? Okay. In a company, the ratio of total amount distributed in all male and female as a salary is in the ratio of 3 and 4. पूरी कंपनी में जो मेल और फीमेल के बीच में सैलरी बांटी गई है वो 3 और 4, and the ratio of salary of each male and each female is 2:3. ठीक है. Find the ratio of number of male and female. Very good. And if the total number of total person is 680, then find the number of male and female. Fine. आया किसी का आंसर? देखो, एक कंपनी, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेल एंड फीमेल. ठीक, ये जो पैसा जमा कर मैं बांट रहा हूँ, ये पैसे की बात कर रहा है, जो पैसे बांट रहा हूँ, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल के बीच में जो पैसे बांटे मैंने, जितने भी मेल थे उनको अगर कितना मिला, 3x मिला, मान लो 3:3x मिला, तो इनको कितना मिला होगा? 4x मिला होगा. क्लियर? विदाउट x भी हम कर सकते हैं, 3 and 4 मिलके. ठीक. एंड द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल, और ईच को क्या कितना मिला है? तो ईच मेल को कितना मिल रहा है? तो ईच मेल को 2 रेशियो मिल रहा है, और ईच फीमेल को कितना मिल रहा है? 3. तो ईच को मिल रहा है. ठीक. टोटल मेल को कितना मिला है? 3x मिला है. टोटल मेल को कितना मिला? 3x मिला. और ये ठीक. पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल. ओके, सो मेल कितने होंगे, पुरुष कितने होंगे? तो मैंने पुरुषों से पूछा. अच्छा एक बात बताओ, अगर सारे पुरुष को मिलाकर 6000 मिल रहे हैं, ठीक है, सबको मैंने सारे पुरुष को 6000 बांटे. सपोज इफ आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग 6000 टू द एंटायर मेल and each male are getting, let's say, 600 rupees. So if each male are getting 600 rupees, that means there will be 10 male. So similarly, entire male is getting how much? So the entire male is getting 3x, and each male is getting how much? 2. So this is the number of male. And what about the number of female? So this is the number of male. So this is the ratios of the number. मैंने सारे आदमियों को 3x रुपए दिए, 3x, और पर हेड को कितना? तो 2 रुपए करके. तो कितने लोग हो गए? ऐसे समझ लो, इफ आई एम गिविंग 40 rupees to the entire male family and each male is getting 8 rupees, that means number of male will be 5. So what about the number of female? So the entire female is getting how much? 4x, and each female is getting 3 rupees.
So this is the ratio. This x and x will get eliminated. This 3 travel over here. So this is 9 and 8. So फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 9 and 8. सो द नंबर रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, तो इसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 9 और 8. 9 and 8 विल बी द आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन को जो मेरा आंसर आया दैट इज 9 and 8. ठीक है. व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन? इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 680. ओके, टोटल पर्सन इज 680. नाउ मेरे हिसाब से 9 मेल है 8 फीमेल है. टोटल पर्सन इज कितना? तो अगर मैं इनकी टोटल बात करूं तो टोटल इज व्हाट 17, which is equivalent to 680. So 1 unit will be what 40. So if 1 unit is 40, then the number of male and female. तो मेल कितने हो जाएंगे? Male will be 9 unit. So 9 times of 40. And what about female? So the female will be 8 times of 40. So basically your answer will be 360 and 320. ये आपके आंसर हो गए. 360 and 320 is the answer. थ्री 360 and 320 इस प्रश्न का उत्तर हो गया. क्लियर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. We have some question left over here, I guess. One of the question was left out. Okay, ये आया क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है. इसे बहुत प्यारे तरीके से हम करेंगे, है ना. आपको मैं एकदम सिंपलेस्ट तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा. Let me check the volume. The volume is too low or what? You are using earphone or not? It's not too low, bacha. It's not too low, bacha. You can be using the earphone. Use a earphone. See, it's coming. ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल अप्रोच. वाह क्या क्वेश्चन है. इनकम ऑफ एबीसी 574 है. एबीसी का जो इनकम का रेशियो है वो 574 है. आपको इससे आसान तरीका नहीं मिलने वाला है. यू वोंट बी फाइंडिंग द इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. व्हाट आई एम डूइंग, let's see the approach what we are using. So this is the ratio of income. And what about the ratio of expenditure? The ratio of expenditure is 6, 5 and 3. See, generally how to approach this kind of question, you will be multiplying this by x and by y, and after forming the equation and all, you will be getting the value of x and y. By putting the values, you will be getting the answer. That will be taking too much of time. This is the only reason why people are having so much of phobia in quant section. They are all dependent on speed maths. And nowadays speed maths, a quantity based speed maths is coming, and a double statement is coming. Fine. And that's the reason many of them are just clearing the pre, but they are unable to clear the mains because even DIs are tough. Fine. So your approach has to be beautiful. See, A saved 20% of his income. What about A? So A is saving 20%. 20% means 1 by 5. 20% is 1 by 5. So out of the income of 5, A is saving how much? 1. It means the ratio of income to that of expenditure of A will be 5 and 4. Income out of 5 rupees, if somebody is spending if somebody is saving 1 rupee, that means he is spending 4 rupees. So this should be in the ratio of 5 and 4. So this is not in the ratio of 5 and 4. How to make it 5 and 4? First make it equal. 6 into 5 is 30. 5 into 6 is 30. See, when 6 will multiplied over here, this will be 30. This will be 30. They were not same. They were in the ratio of 5 and 4. So multiply by 5 and multiplied by 4. Now you will be getting the ratio. Again, what I have done. So this was 5 and 6. Income to expenditure is 5 by 6. But I need to make it 5 by 4. What I have done.
I multiplied by 6, I multiplied by 5, made it equal. Now I multiplied with the desired ratio, that is 5 by 4. What will happen? This 6 and 6 will get eliminated and the ratio will be 5 and 4. Before multiplying this inside, check out whether they are eliminating or not. Yeah. It's better to eliminate that 2 times of 2 and this is 2 times of 3. With this 3 when multiplied over here, this will be 15 and 21 and 12. So these are the ratios of income. And the ratios of expenditure will be what? The ratios of expenditure will be 2 times of 6, 12. This is 10 and this is 6. So see, this is in the 5 and 4 ratio. 5 times, 3 times of 5, 3 times of 4. So we can just say their savings ratio will be 3 ratio, 21. 3 ratio 11 ratio 6. So these are the ratios of their savings. Clear? 1200, 4400, 2400. Sohan Sambhu. Dekhte hain. If the total saving is 8000, okay, so add these values. This is 3 plus 14 plus 6, 20. So this is 20 is representing 8000. So 1 unit will be what? 1 unit will be 400. And this 1 unit is equal to all for all the ratios. Very good. Or else हमें इसमें x था, इसमें y था. The value of x and y are not same. But by doing this ratio, we get a common ratio where 1 unit is equivalent to 400. If 1 unit is equivalent to 400, you can be multiplying this 400 with any ratio, you will be getting the desired result. वरना हम यहाँ पर x की सेपरेट वैल्यू निकालनी होती, y की अलग. इसमें जो x की वैल्यू यूज होता वो यहाँ यूज नहीं होगा. लेकिन यहाँ जब मैंने 1 रेशियो निकाल दिया, if we have calculated 1 ratio, if 1 ratio is 400, multiply with this 400 with any number, we will be getting the real answer. Clear? Is it clear? पूछा किसका? Find the individual savings. Okay, so savings. I am concerned about the savings. So savings of A will be what? Savings of A will be 400 times of 3. That is 1200. Savings of B will be what? 400 times of 11. That is 4400. And savings of C will be what? 400 times of 6. That is 2400. So this will be your respective answer. Clear? तो ये आपका आंसर था. तो ये बहुत ही खूबसूरती से हमें सुना दिया. वेरी गुड शोहन शंभू, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे. ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरती सुना दिया. एंड एट दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क. लेट्स सी कि आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं. दिस इज एन होमवर्क क्वेश्चन. एवरीथिंग इज कंप्लीटेड ना? सो या, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड नाउ. सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे होमवर्क के फॉर्म पे कीजिएगा. ठीक है, और ये क्वेश्चन आप होमवर्क के फॉर्म पे करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा. एंड अर्ली मॉर्निंग एट 6 AM वी आर हैविंग कैलकुलेशन क्लास, कैलकुलेशन सीरीज. और इस सीरीज का जो नाम है दैट इज क्विकर मैथ्स. वी आर लर्निंग some basics of mathematics, some Vedic maths, some shortcuts and all. So it's early morning at 6 AM we are having a calculation oriented class, that is quicker maths, on the channel of Oliveboard banking channel. This is Oliveboard regulatory channel. In the main channel of Oliveboard we are having this class. Okay, so I hope this session was फाइन फॉर यू. आपने कुछ सीखा होगा आज के सेशन से. कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपने इस सेशन से कितना सीखा, कितना नहीं सीखा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. कीप स्माइलिंग.